Namaskar, this is Tulja Bhavani, Assistant Professor of Commerce. I welcome you all to my online classes on law, especially to the wing of business law. This is a course which is specifically designed for the BCom students, BCOC 133 for 6 credits. So today we are going to discuss about contract and its overview. Meaning of contract. The term contract is derived from the Latin word contractum, which means drawn together. In order to make contract, there must be two parties. One party has to make an offer and the other party has to accept an offer. So when offer and acceptance both mix together, it gives a rise to an agreement. So contract is an agreement between two parties which can be enforced in the court of law. So in order to make contract, there must be two parties. One party has to make an offer and other party has to accept the offer. सो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो पार्टियों की ज़रूरत होती है. एक पार्टी अपना प्रस्ताव दूसरे पार्टी के सामने उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए होता है. यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम राम है और अगले व्यक्ति का नाम श्याम है. यहाँ पर राम अपना मोबाइल अपने फ्रेंड को दिखा रहा है और वो कह रहा है कि राम, क्या तुम मेरा फ़ोन 30,000 रुपये में खरीदोगे. यहाँ पर एक व्यक्ति अपना प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति के सामने रख रहा है और इस प्रस्ताव का रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह अपने मित्र से उसकी स्वीकृति पाना चाहता है. सो ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज विच कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो इन ऑर्डर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट एज वेल एज एनफोर्सेबिलिटी. Enforceability means when either of the party to the contract fails to perform their contractual obligation, it is the aggrieved party which has got a right to file a case in the court of law and make the other party to perform their contractual obligation. Now, dear viewers, in our day-to-day life, we enter into so many contracts from morning till we go to the bed in the night without our knowledge. So, for example, we purchase milk from the milk booth and we enter into contract with the milkman. We purchase bread, we purchase kirana shop stores, we purchase so many things. So when we are purchasing so many things, our day-to-day life things, we are entering into contract with the kirana stores. We are purchasing our books, pen, stationery, etc. We are entering into contract with the stationery person. So in my slide you are able to find one small child who is being entertained by their parents with books, toys, etc. So these are all the things which are purchased from a shop. So here the parents have entered into contract with the shopkeeper. So here is the definition of contract. Section 2H of the Indian Contract Act 1872 has defined contract as an agreement enforced by law is a contract. So in order to make a contract, there must be agreement as well as enforceability. An agreement enforced by law is a contract. It means an agreement which can be enforced by law can only be called as a contract. Any agreement which cannot be enforced by law is not a contract. अभी मैंने आपको समझाया कि enforceability का मतलब यह होता है कि दो पार्टियों में से यदि कोई पार्टी अपना प्रॉमिस ब्रेक करती है तो जो पार्टी अग्रीव्ड पार्टी होती है, जिस पार्टी ने लॉस को सफ़र किया है, वो पार्टी जाकर कोर्ट में अपना जो है प्रॉमिस इम्प्लीमेंट करने के लिए जज के पास जाकर
कह सकती है. So a contract needs agreement as well as enforceability. Contract is agreement plus enforceability. Mere agreements will not make a contract. So in order to make contract, there must be the factor of enforceability present in it. Now the question arises, what is an agreement and what is an enforceability? So here the definition of agreement is given in section 2 clause E of Indian Contract Act 1872 as an agreement is defined as every promise or set of promises forming consideration for each other. Every promise or set of promises forming consideration for each other. Consideration means something in return. When you are promising something, you have to receive something from your friend. For example, I made an offer to my friend. Yes, hello Mr. Ram, will you come with me for a cup of tea? He accepted it and he has given me his valuable time. So here his valuable time is a consideration for me, and this consideration should have some value in the eyes of law. That should be in terms of money, and money cannot be measured in terms of time. For example, in our childhood days, we have seen children sharing their lunch boxes. If I give you my part of roti, you are supposed to give me your part of rice. So here consideration for one child is roti and for another child it is rice. So every promise or set of promises forming consideration for each other. If I am promising to give you something, you have to promise me for giving something. I made an offer to Mr. Sham. Hello Mr. Sham, will you buy my car for 5,000 rupees? A toy car I am talking about. So when I am giving my car to Mr. Sham for 5,000 rupees, Sham is receiving the car and I am receiving 5,000 rupees. Here I am making him a promise of handing over the car and he is making me a promise of giving 5,000 rupees. So every promise or set of promises forming consideration for each other. Now the question arises, what is a promise? Promise is again defined in section 2 clause B of Indian Contract Act as when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. It means when a person to whom the offer is made, जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वो व्यक्ति अपनी स्वीकृति आपको स्वतः प्रदान करें. The proposal is said to be accepted. जब वह व्यक्ति अपनी स्वीकृति आपको प्रदान करता है तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वह एक वादा बन जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉमिस. देयरफॉर एन अग्रीमेंट इज ए एक्सेप्टेड प्रपोजल. In an equation, we can simply say that agreement is offer plus acceptance. Offer is otherwise called as proposal. So in order to make an agreement, as I said, there must be two parties. One party has to make an offer and another party has to accept the offer. In the screen you can see that there are two parties interacting with each other. One is making an offer and another one is accepting the offer. Here, as I said that to make a contract there must be an agreement and enforceability. Enforceability, as I said, when either of the party breaks their promise, the aggrieved party has an option to go and file a case in the court of law and see that their promise gets implemented. So enforceability is a legal obligation which says that the parties have to perform their obligations. Right. So all the agreements, when we are entering into contract, all the agreements
are not contracts whereas all the contracts are agreement. सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अग्रीमेंट कहलाएंगे, लेकिन सारे अग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे. क्यों नहीं कहलाएंगे? बिकॉज ऑल द अग्रीमेंट्स will not be called as contract, because in order to make contract apart from agreement we require enforceability, and all the agreements cannot be enforced in the court of law. Why they cannot be enforced in the court of law? Because when we are entering into contract we do not have an intention of entering into legal obligation. So what are those kinds of agreements which lack enforceability are social agreements, domestic agreements, moral agreements and religious agreements. Social agreements, these are the agreements which are made between the friends and colleagues, etc. In the picture you can find that there are 6 different photos. In the first photo you can find that a friend is throwing color on the event of Holi and few children are playing with colors, and you can find the picture of novel coronavirus COVID-19, and you can find a person who is coughing, he is suffering from viral infection, and at the middle you can find Bhagwan Krishna throwing colors on us and wishing us happy Holi, and you can find a person running out of fear of being infected by COVID-19. So these are the agreements which are entered between friends. So this social agreements lack enforceability, means when either of the party breaks their promise, the aggrieved party, even though he is not happy, but he won't file a case against his friend. So to explain my words, I would like to take one example. यहाँ पर एक मित्र जो है उसे जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी में उसको जो है नौकरी लग जाती है, और उसके दूसरे फ्रेंड को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी लगती है. सो हियर दिस प्रोफेसर मेक्स अ कॉल टू हिज फ्रेंड एट जम्मू एंड कश्मीर एंड ही सेज दैट प्लीज कम डाउन टू माय होम फॉर अ डिनर पार्टी. So as the friend is in Indian Army, he will be getting holidays very rarely. So he seeks a permission from his superior, as his childhood friend has called him for a dinner and he cannot deny. So he came all the way from Jammu and Kashmir to have the dinner party at his friend's home. So यहाँ पर क्या होता है, जो मित्र उसका दिल्ली में रहता है उसकी नई नई शादी हुई है और उसकी पत्नी ने जो है उसे पहली बार पिक्चर ले जाने के लिए रिक्वेस्ट की है, और मित्र वहाँ से जम्मू कश्मीर से आ रहा है. मित्र को तो किसी भी तरह से हम मना लेंगे, मगर जो पत्नी नई नई है उसको हम नाराज़ नहीं कर सकते. तो इसने क्या किया, अपने घर को लॉक लगा दिया. लॉक लगा कर ये अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने के लिए चला गया. जब उसका मित्र जम्मू कश्मीर से इसके घर पर आता है और घर पर ताला देखता है, अपने मित्र को फ़ोन करता है. मित्र जो है कहता है कि भैया मैं क्या करूं, आपकी भाभी ने पहली बार कुछ पूछा है शादी के बाद, इसीलिए मैं उसे पिक्चर दिखाने ले गया. कल सुबह मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करूंगा. फ्रेंड कहता है कि भैया मुझे एक दिन का समय मिला था और मैं अब फिर से जम्मू कश्मीर जा रहा हूं. यहाँ पर एक मित्र ने अपने मित्र से वादा किया था कि भैया तुम आज शाम को मेरे घर डिनर के लिए आओगे, और उसका जो मित्र है वो जम्मू कश्मीर से आता है, पर यहाँ पर उसके मित्र के घर में ताला देखता है. देखने के बाद में ये व्यक्ति जो है नाराज़ होकर वापस फिर अपनी इंडियन आर्मी को चले जाता है. हियर ऑल्सो द प्रॉमिस इज ब्रेक्ड बाय हिज फ्रेंड हु इज ए प्रोफेसर. सो द पर्सन, the opposite person who works in Indian Army cannot file a case against his friend, because it is not good on his part to file a case. अरे भैया आपको खाने के लिए निमंत्रण दिया और उस समय पे अगर मैं नहीं था तो क्या तुम मेरे खिलाफ केस दाखिल करोगे? कोई केस दाखिल नहीं किया जा सकता. सो हियर हिज फ्रेंड विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, बिकॉज वाइल एंटरिंग ए कॉन्ट्रैक्ट देयर वॉज नो लीगल इंटेंशन इन आइदर ऑफ द पार्टीज.
So social agreements are those agreements which are entered between the friends and they cannot be enforced in the court of law. Here comes domestic agreements. Dear viewers, domestic agreements are those agreements which are entered between the family members. So these are the agreements which cannot be enforced in the court of law, because when we enter these agreements with love and affection, out of respect, so these are the agreements which are entered between family members. Domestic agreements are those agreements which are entered between the family members. So when these agreements are made, these are made without any legal intention, without any enforceability aspect. So here you can find in the picture that a child is reading and making his day and night one in order to get topped in the class. So what agreement was made between him and his father was, his father has made him a proposal that, dear child, if you come first in the class, I am going to buy you a cycle. So this child मेक्स डे एंड नाइट वन. ये इतना पढ़ता है कि इसे जागने और सोने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता और ये क्लास में टॉप कर जाता है. जब ये क्लास में टॉप कर जाता है तो ये अपने पिताजी से साइकिल की मांग करता है. तो पिताजी कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे ये प्रॉमिस इसीलिए किया था कि तुम अच्छी तरह से पढ़ो. फ़िलहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दिला दूंगा. सो जब पिताजी ऐसा कहते हैं तो ये लड़का कोर्ट में नहीं जा सकता. क्योंकि क्या कोई मोटरसाइकिल ना दिलाने पर अपने बाप के ऊपर या अपने पिता के ऊपर केस कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि सुनने वाले को और बोलने वाले को एक मजाक ही नज़र आएगा. सो डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर दोज अग्रीमेंट्स विच आर मेड बिटवीन द फैमिली members and they lack enforceability. Here there is an example of Balfour versus Balfour case. This is a landmark judgment. Here Mr. Balfour is a Britain officer who got his posting in Ceylon. यहाँ पर मिस्टर बाल्फर जो हैं वो आर्मी में काम करते हैं और उन्हें लंदन से साइलॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है. सो व्हेन ही वॉज ट्रांसफर्ड टू साइलॉन, ही वॉन्ट्स टू टेक हिज वाइफ along with him, but his wife falls ill. So he cannot take his wife ill due to her health. So he makes a promise to his wife that after going to Ceylon, every month he will be sending her 30 pounds. So 2-3 महीने जो है मिस्टर बाल्फर अपनी पत्नी को $30 भेजते हैं, $30 या 30 पाउंड्स भेजते हैं और उसके बाद अपनी ड्यूटी में वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी पत्नी को अमाउंट भेजना ही भूल जाते हैं. सो वाइफ गेट्स एंग्री एंड शी फाइल्स अ केस अगेंस्ट हर हस्बैंड सेइंग दैट दिस फेलो इज़ नॉट गिविंग मी द मनी. जज साहब जजमेंट देते हैं और कहते हैं कि वॉट एवर अग्रीमेंट इज़ मेड बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड इज़ ए डोमेस्टिक अग्रीमेंट एंड इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. So while agreement was made, there was no intention between Mr. and Mrs. Balfour that if either of the party breaks their promise, the aggrieved party will file a case in the court of law. So this case was denied. Then the another agreement are the religious agreements. Religious agreements are those agreements which are made between the divine and the devotee. Religious agreements वो agreements होते हैं जो भगवान और भक्त के बीच में बनाए जाते हैं. एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ आपको भगवान गणेश नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ. सो यहाँ पर एक पिता ने अपने बच्चों के लिए कोई मन्नत मांगी है और उन्होंने कहा है कि गणेश जी, जब मेरे बच्चे स्कूल में फर्स्ट आएंगे तब मैं आपके पास लड्डू चढ़ाऊँगा और सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा. लड़का जो है कॉलेज में स्कूल में टॉप कर जाता है.
और ये जो भक्त हैं भगवान जी के सामने लड्डू लेकर आते हैं, लेकिन मुकुट चढ़ाने की इनके पास कोई क्षमता नहीं है। तो ये भगवान से क्या कहेंगे कि भगवान जो भी मेरे पास है वह सब आपका ही है और मेरे पास आपके लिए मुकुट चढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। सो यहाँ पर भी अग्रीमेंट हुआ था, किसके बीच में? भक्त के बीच में और भगवान के बीच में। चाहे आप भगवान को दीजिए या नहीं दीजिए, कुछ दीजिए, समर्पित कीजिए या नहीं कीजिए, भगवान आपके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। गॉड विल नॉट एनफोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट गो टू द कोर्ट एंड ही विल नॉट एनफोर्स you to perform your promise. So this was all about religious agreements. These are the agreements made between the divine and the devotee, or between the priest and the devotee. Next agreements are the commercial agreements. Dear viewers, there are 5 types of agreements, as I said: social, domestic, moral, religious and commercial. The above 4 agreements cannot be enforced in the court of law. They lack enforceability. But commercial agreements are those agreements which can be enforced in the court of law because money is involved in it. जहाँ जहाँ भी पैसा include होगा वहाँ वहाँ पर enforceability होगी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ जहाँ भी पैसा आएगा वहाँ वहाँ पर एनफोर्सबिलिटी पॉसिबल होगी। हियर यू कैन फाइंड 2 persons मेकिंग एन अग्रीमेंट विथ ईच अदर। यहाँ पर आपको 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम कृषव है। यहाँ पर राम अपने मित्र कृषव के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि भैया कृषव, क्या तुम मेरा लैपटॉप 50,000 रुपये में खरीदोगे? यहाँ पर राम अपना प्रस्ताव अपने मित्र के सामने रखता है कि भैया कृषव, क्या तुम मेरा लैपटॉप 50,000 रुपये में खरीदोगे? कृषव भी अपने मित्र को अपनी स्वीकृति देता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा लैपटॉप 50,000 रुपये में खरीदूंगा। यहाँ पर राम जो है अपना लैपटॉप कृषव को देते हैं और कृषव जो है अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाल कर राम को देते हैं। यदि इन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने भी अपना वादा तोड़ा तो जो व्यक्ति अग्रीव्ड पार्टी होगा, जो व्यक्ति भी लॉस सफ़र करेगा, वो कोर्ट में जाकर अपना प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखेगा और अगली पार्टी को अपनी प्रॉमिस इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूर कर देगा। सो डियर व्यूवर्स, आज हमने अपनी क्लास में ये सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आवश्यकता, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। और हमारी जानकारी के बगैर हम दिन में सुबह उठने से लेकर रात में सोते समय तक हम हमारी जानकारी के बगैर कितने ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर जाते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कॉन्ट्रैक्टम विच मीन्स ड्रॉन टुगेदर, and in order to make contract there must be agreement as well as enforceability. So we have discussed this. So agreement, the word contract requires agreement and enforceability. Agreement is defined in section 2H of Indian Contract Act 1872 as an agreement enforced by law is a contract. To call it a contract, there must be an agreement and this agreement should be enforceable. No enforceability, no contract. Then we have discussed about agreement, which is defined in section 2E as every promise or set of promises forming consideration for each other. So here we discussed about promise. Promise is again defined in section 2 clause B as when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. So therefore an agreement is an accepted promise. Then we discussed about offer and acceptance.
To make an agreement, we require offer and we require acceptance. So, to make an agreement, one party should make an offer and the other party has to accept it. Then we discussed about enforceability. Enforceability means when either of the party to the contract breaks their promise, the aggrieved party has an option to go to the court and file a case against the other person and see that their promise is implemented. Then we discussed about 5 types of agreements. 5 types of agreements. Out of 5 types of agreement, 4 types of agreement lack in enforceability. They are social agreement, domestic agreements, moral agreements and religious agreements. Social agreements are those agreements which are made between the friends. Then we discussed about domestic agreements which are made between the family members. Then we have even discussed about a landmark case with regard to Mr. and Mrs. Balfour, which was denied by the court. Then we discussed about religious agreements. These are the agreements which are made between the divine and the devotee, which also lacks enforceability. And at the end, we have spoken about commercial agreements. Commercial agreements, as I said, are those agreements which are enforceable because it involves money. So, these were the things which we have learned in our today's class, and here I am signing off. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.